इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो आपका और उसका टॉपिक एक जैसा है बट योर पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, the other thing is the same, ठीक है. So you will be including the ideas and the definition from that person. और उसने आर्टिकल में लिखा होगा, there can be the source, can be the book, it can be the magazine, it can be the research papers, या जो भी articles हो जो आपको नजर आता है, that and you see that there are some examples which are very much related to your topic, right? So what you do is that you include all those information in your research. तो हम ये नहीं कह सकते कि जो academic writing है, it is solely it solely relies on you. हम ये कह सकते हैं कि it also uses the ideas and research of other sources, ठीक है, जैसे book हो गया, journal articles, websites होते हैं. Again I would say when you write something, an essay or other things, ठीक है, what you do is that you sometimes relies on websites, you go and google it, और wikipedia पे आप लोग को नजर आते हैं and all that, ठीक है. So these other sources may be used to support the author's idea, or the author may be discussing analysis or critiquing the sources, ठीक है. जैसे literature review में मैंने आप लोगों को कहा कि in literature review you have to make a critique, you have to make a list of those works कि हाँ इस बंदे ने भी इस टॉपिक पे काम किया by already, but my topic is a bit different, I have this perspective. So when you are including other works, जैसे जर्नल आर्टिकल्स है, बुक्स है, मैगजीन्स है, या किसी भी चीज से, you have to refer it. आप उसको अपने नाम पे कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. You might have seen this कि जब आप किसी भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी आप बाहर मुल्कों के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस इज द सैंपल बट यू शुड नॉट कॉपी एंड पेस्ट इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड देयर, ठीक है. सो जब आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं, वो कहते हैं आपने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसलिए क्योंकि वो जो वर्डिंग्स वहाँ पे यूज हुए हैं वो ऑलरेडी किसी का था एंड दैट वाज ऑलरेडी रिकॉर्डेड. So the same is the case with every paper or every journal or a website, ठीक है, it is already recorded there. तो वो जो when you start writing or when you copying and pasting it in your own document, it will come in the category of plagiarism, ठीक है. Plagiarism is basically when you steal someone's document या उसका idea उठा के अपने नाम पे लिखते हैं, that's something plagiarism. तो plagiarism का test होता है proper, they put your assignment or personal statement or proposal in a system, और there you would see कि वो जब नजर आते हैं तो there are red linings, ठीक है. आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट होता है जिस जहाँ पे आपकी अपनी बातें होती है या आपने रेफर किया होता है तो उस पर रेड लाइनिंग्स नहीं आती, लेकिन अगर आपने किसी और की बात उठाई है वहां पे लिखी हुई है तो वो और आपने उसको रेफर नहीं किया होता तो वहां से रेड लाइनिंग्स आ जाती है कि दिस इज कॉपीड एंड पेस्टेड ऑन हिज ओन नेम, ठीक है. सो यू कैन नॉट डू इट, इट इज एकेडमिकली रॉन्ग, इट इज इलीगल, ठीक है. आप किसी और का आइडिया उठाते हैं, then refer it back to the person, ठीक है. So references are very much necessary in academic writing. When we take somebody else's ideas and definition, we have to refer it back to the person, ठीक है. और we have to mention the author's names कि ये इस बंदे से मैंने लिया हुआ था, ठीक है. So the purpose or to of this discussion, to make a point over here, is that referencing are very important and they are like important to know about that what are references. So I have uploaded a document जो slides है lecture 6 के, there is a quick guide, ठीक है. This is APA referencing. मैं जरा स्क्रीन शेयर करती हूँ यहाँ से. ये भी आप लोग को नजर आ रहा है APA referencing? Yes, ma'am. ठीक है. So
there are so many types of referencing. It is not only APA, which is American Psychological Association. Okay? There can be MLA style. There are ठीक है रेफरेंसिंग के styles जो है there are so many ठीक है depending on the sciences ठीक है so we have APA style, we have MLA style, we have Chicago, and Harvard, we have IEEE style, and much more. ठीक है these are the styles. इसके अलावा भी दो तीन styles है जो लोग follow करते हैं. Chicago is mainly used by जैसे अगर बाहर बाहर लोग जाते हैं तो वो लोग ज्यादा शिकागो को follow करते हैं, especially like when people go abroad. Chicago हमारे भी मुल्क में use होता है, people use them, this is a style. So it's up to you that what your department, whatever referencing style your department is following, you have to follow that one. ठीक है. हार्वर्ड इज यूज्ड बाय, अभी मैंने सुना था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी लोग हार्वर्ड को यूज करते हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट स्टाइल. देयर आर द रेफरेंसिंग स्टाइल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी रेफरेंस ही होता है. ठीक है. IEEE is basically an institute of electrical and electronics engineering. This style is used by those students or those people who belong to electronics, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम, या जो कंप्यूटर बेस्ड चीजें होती है वो ज्यादा फॉलो करते हैं. ठीक है. यू कैन आल्सो फॉलो इट, इट्स अप टू यू. इफ योर डिपार्टमेंट वांट यू to follow this particular format, then you have to follow that format. ठीक है. या फिर अगर रेफरेंसिंग स्टाइल वो आपको जैसा ही प्रोवाइड करते हैं वो आपने फॉलो करना होता है, बट देन दे हैव टू मेक यू लर्न इट. ठीक है. जो MLA स्टाइल है, इट इज यूज्ड बाय MLA इज मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है. ये लैंग्वेजेस में ज्यादातर यूज होते हैं, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, so many other. ठीक है. और APA style is used both by empirical and social sciences. It is American Psychological Association. It is the most familiar one. ठीक है. It is easy भी है और it is the most familiar one. तो ये social sciences भी use करते हैं. जैसे I was using it in linguistics, which is a social science. ठीक है. और you can also use it because you belong to empirical sciences, जहाँ पे आप टेस्ट और experiments और ये सारी चीजें करते हैं. They are mostly empirical sciences. ठीक है. So APA style is a familiar one. People use them both by empirical and social sciences. ठीक है. So today I want to discuss APA style. The rest of them, like, you can learn it in your technical report writing. You will be having this particular subject, technical report writing, in your 7th semester or maybe 6th semester. ठीक है. So there you need to learn कि what is Chicago, Harvard or IEEE, whatever they want you to जिस तरह आप लोगों ने अप्लाई करने होते हैं. ठीक है. They will make you learn it. But the most important one is the APA, which is the most familiar one. तो मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को APA ही पढ़ाती हूँ. ठीक है. APA is American Psychological Association. It is a reference style. ठीक है. और इसमें क्या है, we can read it from this document that I have uploaded. I hope you can see. ठीक है. The American Psychological Association reference style uses the author date citation system. ठीक है. Author date citation system is like when you write, for example, you have
जैसे आप टेक्स्ट के, like sometime we have n text citations and reference list, ठीक है। जो रेफरेंस लिस्ट होता है या एनटेक्स साइटेशन जो है, these are the एनटेक्स citations are the citations or the references that we give within the text, text के अंदर। I mean like you can write it in introduction, literature review, ठीक है। और it can be the methodology में भी कोई चीज अगर आप you want to explain a topic या जो आपका theory है, the instrument that you will be using, ठीक है। so वो जो सारी चीजें हैं उनका आप कभी कभी उस टर्म को डिफाइन करते हैं, so you can also give रेफरेंस ऑफ द पर्सन, उसने किसी और ने डिफाइन किया होता है, एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। विद इन द मेथोडोलॉजी या जितना भी द स्ट्रक्चर इन द होल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ द प्रपोजल, आप उस होल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोजल में अगर आप कहीं पे भी किसी चीज को रेफर करते हैं किसी बंदे को, तो दीज आर कॉल्ड द एंटेक्स साइटेशन। और एंटेक्स साइटेशन आर मेनली थ्रू ऑथर डेट फॉर्मेट होता है। ऑथर डेट फॉर्मेट का क्या मतलब है कि यू वी विल ओनली इंक्लूड द ऑथर नेम एंड द डेट, ठीक है। इसको ऑथर डेट फॉर्मेट एपीए स्टाइल में एंटेक्स साइटेशन में ऑथर डेट होता है। वी इंक्लूड ओनली द नेम ऑफ द ऑथर एंड द डेट ऑफ द पब्लिकेशन डेट होती है जिसकी, जैसे अगर मैगजीन है या फिर जर्नल आर्टिकल्स है या बुक है या रिसर्च पेपर है या कोई डिजर्टेशन है, पीएचडी एमफिल डिजर्टेशंस होती है, ठीक है। अगर वो जिस डेट को पब्लिश हुआ हुआ होता है उसका ऑथर और उसका डेट होता है, ठीक है। सो वी यहाँ पे कहते हैं कि इट इज द ऑथर डेट साइटेशन सिस्टम। और फिर इस ऑथर डेट फॉर्मेट से आप लोग को एनटेक्स साइटेशन में बंदे को पता नहीं चलता कि वेदर दैट पर्टिकुलर सोर्स दैट जहाँ से आपने ये इस इंफॉर्मेशन को उठाया, वेदर इट इज a book, whether it is a journal or an article, तो उस उसको explain करने के लिए then we give a reference list at the end or at the bottom of the document, ठीक है। तो उस reference list में क्या होता है, the same author और उसका जो date format होता है, author और date जो होता है उसका list होता है कि बेसिकली इट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट ऑथर कि जो रेफरेंस मैंने एनटेक्स में दिया था वो रेफरेंस मैंने यहाँ से उठाया था। इट वॉज द बुक दैट इज रिटन बाय दिस पर्टिकुलर ऑथर एंड पब्लिश इन दिस डेट from this university, this city and something like that. There are so many information you will see that how can we write it. अब यहाँ पे जो examples हैं यहाँ से पढ़ ले तो आप लोगों को पता चल जाएगा। Before going into the discussion of रेफरेंस लिस्ट, ठीक है, वी नीड टू लर्न दैट ऑथर डेट फॉर्मेट में अगर हम साइटेशन करते हैं, इफ वी साइट इट इन द एंड टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट के अंदर जब हम साइट करते हैं उसको हम किन किन तरीकों से साइट कर सकते हैं। इफ यू आर हैविंग वन राइटर या अगर हम एक कोट को डायरेक्टली उठाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिफाइन अ पर्टिकुलर आइडिया, राइट, और आप किसी और का डेफिनेशन उठाते हैं बट यू डू नॉट वांट टू पैराफ्रेज, आप अपने वर्ड्स में नहीं लिखते, आप कहते कि नहीं मैंने उसी के अल्फाज यूज करने, आई डू नॉट वांट टू चेंज देम, सो दैट बिकम्स द डायरेक्ट कोटेशन फॉर यू। आप किसी का डायरेक्ट वर्डिंग उठाते हैं, ठीक है, तो उस आपने उसको कैसे पुट करना होगा, ठीक है, एंड देन विद इन द टेक्स्ट, ठीक है। और अगर आप इनडायरेक्टली उठाते हैं तो उसको कैसे पुट करना होता है। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रेफरिंग टू वन बुक और उसी बुक में किसी और का रेफरेंस है दैट यू वांट टू पिक दैट रेफरेंस एज वेल, तो उसको आपने कैसे लगाना है विद इन द टेक्स्ट। रेफरेंस लिस्ट की
बात बाद में आ जाती है। वो वही लिस्ट होता है जो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं विद इन द टेक्स्ट, बट यू गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस रेफरेंस के ये जो ऑथर और डेट का मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट इज बेसिकली अ बुक, ठीक है, ऑफ दिस पर्सन which was published in this day, ठीक है। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर इट। यहाँ से पढ़ लेते एंड टेक्स्ट साइटेशन की। बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ रेफरेंस लिस्ट, आपने एंड टेक्स्ट साइटेशन को पहले समझना है कि व्हाट इज दैट, ठीक है। द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन रेफरेंस स्टाइल यूजेस द ऑथर डेट साइटेशन सिस्टम व्हेन कोटिंग डायरेक्टली और indirectly from a source, ठीक है। directly I mean like when you just pick the same words, you do not want to paraphrase it, ठीक है, तो उसको हम directly बोलते हैं। और indirectly means के you take the idea but you write it in your own words, ठीक है। the source must be acknowledged in the text by the author name and year of publication, ठीक है। so end text citation क्या होती है? to cite information directly or indirectly, there are two ways to acknowledge citations। दो तरीके हैं। like if you want to take the citation, I mean like the reference, ठीक है, या आपकी कोई भी बात जो आप वहां से कॉपी करते हैं, तो आप उसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू एक्सप्लेन सम एबिलिटीज, ठीक है, फॉर प्रोफेशन, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो आप वो एक्सप्लेन करते करते आपको किसी और की बात याद आ जाती है, या फिर आप किसी गूगल पे उसका एक्सप्लेनेशन देख के वहां पे आप कहते हैं कि हाँ दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू माय टॉपिक, व्हाई डोंट आई जस्ट कॉपी इट। तो आप उसको दो तरीकों से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। लेकिन फिर रेफरेंस की भी दो चीजें होती है। दिस जब आप रेफरेंस देते हो उस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कोटेशन का, तो उसके दो तरीके होते हैं। आइदर यू कैन मेक दिस पर्टिकुलर citation, ठीक है, और रेफरेंस एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट यू आर राइटिंग, और आइदर यू कैन पुट इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन parenthesis, ठीक है। to cite the information directly or indirectly, there are two ways to acknowledge citation: make it a part of the sentence or put it in the parenthesis at the end of the sentence। अब जरा एग्जाम्पल पे गौर करें, आप लोगों को इस बात की समझ आएगी कि हाउ कैन वी मेक इट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और पुट इट इन parenthesis। यूज डायरेक्ट कोटेशन के लिए यूज डबल कोटेशन मार्क्स अराउंड द कोट एंड इंक्लूड पेज नंबर व्हेनेवर like you take the direct quotation, like you do not want to paraphrase the words, और आप अपने अल्फाज में नहीं लिखते, you want to take the same words, ठीक है, then you have to we can say then you have to use quotation marks, ठीक है, we always do it। तो यहाँ पे कॉर्न एंड लॉटन 2014 are give that many different kinds of abilities are essential for any profession, page 151। whenever we take the direct quotation, we need to give page numbers as well। in APS style we give the page numbers, लेकिन इस चीज को दोबारा देख लें। many different kinds of abilities are essential for any profession, कॉर्न एंड लॉटन 2014 पेज 151। so यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है कि make it a part of a sentence, ये मतलब है कि you can make it a part of a sentence। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि according to कॉर्न एंड लॉटन 2014 many different kinds of abilities are essential for any profession, then you have to give the page number at the end, ठीक है। और आप इसको you can just put it in parenthesis at the end of the sentence, ठीक है। जब आप कोई कोट उठाते हैं, आप लिखते हैं, सो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद यू कैन गिव द रेफरेंस कि हाँ मैंने यहाँ से ये रेफरेंस लिया हुआ था। और आइदर यू कैन जस्ट पुट इट इन फ्रंट और इन द मिडल, और यू कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। so part of a sentence can be in the middle, or we can say it can be in the start। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं according to this person, लेकिन वो जो आप नाम लिखते हैं उसके साथ डेट लगाना जरूरी है, ठीक है। so कॉर्न एंड लॉटन 2014 are give this is make it a part of a sentence का एग्जाम्पल है। put it in parenthesis का the second one है। इस चीज की अगर आप लोग को समझ आई है तो आई कैन प्रोसीड, अगर उससे नहीं आती तो फिर मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। फिर वी अंडरस्टैंड दिस।
आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस आ रही है, आ रही है। क्यों नहीं आ रही? तो आप मुझे साथ साथ बोला करें, वरना यहाँ से फिर आप बंद कर लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को या आवाज नहीं आ रही या आप लोग को कोई मसला ही नहीं है। आपको अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग? आई डू। Yes, ma'am. बाकी बाकी लोगों को समझ आ रही है? ठीक है। और एक नाउ द सेकंड एग्जांपल इज इनडायरेक्ट कोटेशन और पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग। दिस वाज द direct quotation. ये many different kinds of abilities was the same wordings used by these two people. एक और चीज आप लोगों ने अगर नोट की है, when we make a part of a sentence and there are two writers, ठीक है, अब now there are two writers for this particular source, ठीक है, जो 2014 में इन लोगों ने पब्लिश किया हुआ था। when we make it a part of a sentence, जहां पे भी conjunctions आते हैं, these conjunctions are in the same shape as they are. लेकिन अगर उसको when you just write it, put it in parenthesis at the end of the sentence, then you write the constraints, जो contracts होते हैं उनको आप यूज करते हैं, जैसे एंड का ये पोजीशन है, ठीक है, देन यू पुट अ कॉमा आफ्टर द ऑथर नेम एंड देन द डेट, फिर डेट के बाद कॉमा एंड देन द पेज नंबर। दिस इज पारा नंबर या पेज नंबर both of them, ठीक है। indirect quotation, paraphrasing और summarizing. When you paraphrase the wordings of the others, then there is no need to put it in quotation marks. Professional knowledge alone does not make someone a very capable professional. Now this is the writer's name, ठीक है, at the end उसने put किया हुआ है। You can also make it a part of a sentence that according to these people 2014, professional knowledge alone does not make someone a very capable professional, ठीक है। सो इनडायरेक्ट कोटेशन बड़ा इजी है, आप उसको अपने तरीके then you need not to put any quotation mark and any page number as well, right? Page number is necessary or para number is necessary when you take the direct quotation. Citation from a secondary source जो है, there are two things, ठीक है, there are two views of secondary sources and primary sources. Primary source जो है, primary and secondary sources, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस का और रेफरेंसेस का एक डिफरेंस है। सोर्स रेफरेंस और सोर्सेस, इन दोनों का एक डिफरेंस है। Primary and secondary sources for you when you are investigating a problem, when you conduct a research, ठीक है। So the primary source for you is your own essays, the essays that is provided by the supervisor, the knowledge that is provided by the supervisor, the data collection, ठीक है, when you work in a field या फिर टेस्ट करते या experiments करते, so जो आपके पास जो भी knowledge आता है, that becomes a primary source for you. The secondary source for you or the secondary knowledge for you are the books, the magazines, the articles, journal articles, websites या कोई भी information जो आपके topic से related है, that becomes the secondary source for you. But when we discuss references, there is a different idea for the primary and secondary source, ठीक है। For example, if you want to take a reference from a book, ठीक है, या किसी भी journal article से लेते हैं, लेकिन उस बुक में देयर इज अ रेफरेंस, ठीक है, अगेन देयर इज अ रेफरेंस, उस बुक में किसी और को इस बंदे ने रेफर किया हुआ है, और वो जो रेफरेंस है, यू वांट टू टेक दैट रेफरेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपकी मर्जी, आप उसको पैराफ्रेज करते या फिर द सेम वर्डिंग्स आप लेते, ठीक है। दैट बुक बिकम द प्राइमरी सोर्स फॉर यू, लेकिन उसमें जो रेफरेंस है किसी और का रेफरेंस है, दैट बिकम द सेकंड। ये चीज है,
अगर if you are conducting a research, at the time of that conduction, your own knowledge or the supervisor knowledge or somebody who is helping you in the same investigation, that becomes the primary source for you. आपका जो भी literature review है, या when you take the help from other sources, जैसे कोई book है, magazine है, all these stuffs become the secondary source for you. लेकिन reference में ये चीज है that when you are taking a reference from one book or a magazine or या फिर किसी journal article से लेते हैं, that the first the book is becomes the primary source for you, लेकिन उस book के अंदर जो reference है that you want to take that as well, that becomes the secondary source for you. ठीक है? तो यहाँ पे आप देख ले, कहते हैं citation from a secondary source. ठीक है? Now आप आप में से कोई भी इसको रीड कर ले, अगर आप लोग को नजर आ रहा है तो कोई भी इसको रीड कर ले जरा, को नजर आ, मौजम आप रीड कर ले। रीड कर ले, शाबाश। किधर चले गए आप लोग? रीड कर ले, शाबाश। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम आ रही है, लेकिन आपने क्या कहा? मेरा नेट चला गया था, मैं भी आया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। क्या हो जाते हैं आप लोग के नेट को? ये देखिए, गुस्सा आता है मुझे। अभी तो आपको वैसे भी मेरी आवाज नहीं आएगी काजी। मैंने आप जैनब, आप जरा बोले। आप तो क्लास में इतनी चुप रहती हैं, कोई बात ही नहीं करती। आप जरा यहाँ से रीड कर ले। आप रीड कर ले, शाबाश। मैम कौन सा पैराग्राफ?
हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अच्छा, यस में आ रही है। चले मैं यहाँ से खुद पढ़ती हूँ। निमरा, आप लोग को मेरी आवाज आ रही थी? आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं? यस मैम, आ रही है आवाज। अभी आप पढ़ सकते हैं? साइटेशन फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स। यस Yes, ma'am. मैम, पढ़ूं? जी, पढ़ लें। Gold's 1981 research raises fundamental doubts as to whether we can continue to think of intelligence as undimensional, as cited in Cohen and Lawton 2014 pp 151 to 152. हम्म, Intelligence cannot be believed to consist of one thing anymore. and इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कभी आप डिस्कस कर सकते हैं? आप सब, इट्स नॉट ओनली फॉर यू, एनीबडी हु कैन टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर सोर्स कि इसमें सेकेंडरी सोर्स कौन सा है, प्राइमरी सोर्स कौन सा है, और when we want to make the reference as a part of the sentence, how can we put them, or when we want to make it write it at the end of the sentence in parenthesis, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? Can somebody talk on this? मैम सेकेंडरी सोर्स तो शायद बोला बोला है, और जहाँ से लिया गया है वो प्राइमरी सोर्स है। हम्म, तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स कौन सा है और सेकेंडरी सोर्स कौन सा है इन दीज? मैम Primary is Cohen and Lawton, and secondary is Gold. ठीक है, और जहां अगर हम इसको लाइक यू सी, गोल्ड इज द सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, रेजेस फंडामेंटल डाउट्स, तो यू हैव टू पुट दिस के एज साइटेड इन दिस पर्सन, एज साइटेड इन दिस बुक, ठीक है, बिकॉज दिस वाज द प्राइमरी सोर्स फॉर यू और ये सेकेंडरी सोर्स था आपके लिए। अब अगेन, अगर इफ यू वांट टू मेक टू राइट इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन पैरेंथेसिस, देन यू हैव टू पुट द सेकेंडरी सोर्स फर्स्ट, और फिर आपके बाद आपने कहना है कि इज साइटेड इन दिस पर्टिकुलर सोर्स, और उसका फिर डेट लिखना होता है। सो इट इज बेसिकली द ऑथर डेट फॉर्मेट, you write the author name and the date of the publication, but when you are taking the direct quotation, then you have to add the page number as well or the para number, ठीक है। अगर इतना आप लोग को अगर इसकी समझ आई है तो बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद ये सारे जो है, these are the reference list में, जैसे हम अगर in a reference list which like we include at the bottom of the document or at the end of our writing, ठीक है, तो वो सारा रेफरेंस लिस्ट वाला है। then it is basically the explanation for the references that we give in end text, ठीक है, or the citations that we give in the text, ठीक है। तो um, I want to share an example with you for these what we discuss, ठीक है। ये एक सैंपल पेपर है। कैन यू सी दिस सैंपल पेपर? Yes, ma'am. ठीक है, बेसिकली इसका जो सैंपल है, ठीक है, ये सैंपल पेपर जो है इट इज फॉर्मेटेड एज एपीए, ठीक है। एपीए में फिर आपने फंड को कितना रखना है, जो साइड लाइनिंग है आपने उसको कैसे ड्रा करना है, और ये सारी चीजें लिखनी कैसी है। दिस पेपर इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू, कैन मेडिकेशन क्योर ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, अ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। it is just an example, the topic is not very much related to you, but this was just the APA format का मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ आप लोग को अपलोड किए हैं कि हाउ कैन वी इंक्लूड APA रेफरेंसेस। तो ये सारा फॉर्मेटेड है उस तरह, आपने लाइनिंग्स कैसे छोड़नी है, आपने ड्रा कैसे करना है, आपने ये सारा सारा जितना भी फॉर्मेट है आपने उसको कैसे करना है, ठीक है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन दिस इज पर्टिकुलरली अ पेपर, इट इज नॉट अ प्रपोजल। एक पेपर है तो इसका फॉर्मेट ऐसा है, ठीक है। अभी आप लोग को मैं बताती हूँ, ये इस बंद ये यहाँ से आप लोग रीड कर लें। तो in March 2004, US Surgeon General Richard Carmona called attention to a health problem in the United States that until recently has been overlooked. Childhood obesity. Carmona said that the astounding 15
परसेंट चाइल्ड ओबेसिटी रेट। अब ये जो लफ्ज है, ये वाला लफ्ज, ये उसने किसी एक और वहां से उठाया हुआ है, ठीक है। एक इस इस बंदे के जो किसी पैम्पलेट में या किसी भी उनकी जो अपनी साइट्स होती है उस पे उसने रिव्यू किया हुआ था, ठीक है। तो वो उस कार्मोना के रिव्यू से इसने ये वही लफ्ज उठाया हुआ है, द सेम वर्डिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे एपिडेमिक जो है ये भी सेम वर्डिंग है। तो आप जरूरी नहीं है कि दैट यू टेक द होल सेंटेंस, यू कैन जस्ट पिक अ सिंगल वर्ड जो आप कहते हैं कि इसके लिए मेरे पास एक और अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, आई वांट टू हैव द सेम वर्डिंग, सो देन यू हैव टू पुट इट इन कोटेशन, ठीक है। तो इस बंदे ने सिर्फ एक एक लफ्ज उठाया हुआ है कोटेशन से, और यहाँ पे सिर्फ एक फ्रेज है, डबल्ड इन चिल्ड्रन एंड ट्रिपल्ड इन एडोलेसेंट्स, ठीक है। तो इसको भी इसने कोटेशन में बंद किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पारा 3-6, और ये इसने डेट दिया हुआ है, डेट, द ऑथर नेम, और ये वाला पारा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन गो फॉर द कोटेशन मार्क्स। अगर आप एक लफ्ज को भी उठाते हैं तो देन यू हैव टू गिव द पेज नंबर और द पारा नंबर, चाहे वो एक लफ्ज हो या फिर एक फ्रेज हो या एक सेंटेंस हो, लेकिन अगर वो इट इज द सेम वर्डिंग और द ऑथर्स वर्डिंग, तो फिर यू हैव टू पुट इट इन दिस वे। आप इसको देख ले, दीज आर अगेन, ये एक डायरेक्ट कोटेशन है, ठीक है। आप इसके एग्जांपल्स इस पेपर में देख सकते हैं, इस पेपर को रीड कर लें और ये एग्जांपल्स देख लें। वी विल बी डिस्कसिंग द रेफरेंस लिस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप इट इज क्लियर। इतना अगर आप लोग को समझ आ जाए तो भी बहुत है। रेफरेंस लिस्ट की बात में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन रेफरेंस लिस्ट का एक सिर्फ एक एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ कि जो यहाँ पे मैंने कार्मोना की बात की, पारा 3-6 वाला, आप रेफरेंस लिस्ट में वही चीज, आई विल शो इट टू यू, ये वाला जो लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में इसने दिया हुआ है कार्बोना RH 2004 मार्च टू द ग्रोइंग एपिडेमिक ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, ठीक है। ये अब उसकी जो है जनरल आर्टिकल कोई है, जनरल आर्टिकल है, वो किसी वेबसाइट पे उसने पोस्ट किया हुआ था, और इस बंदे ने वहां से रिट्रीव किया हुआ है। रिट्रीव का मतलब ये है कि इज टेकन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल, ठीक है। तो जब गूगल से आप उठाते हैं तो यू राइट रिट्रीव्ड, और ये रिट्रीव्ड कब आता है, वी हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ साइटेशंस, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि हम साइटेशंस को कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो MS डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोग को नजर आ रहा है, एम आई शेयरिंग दिस, जो MS वर्ड है, Yes. ठीक है। MS वर्ड में भी रेफरेंस स्टाइल आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, और आप इसमें एक तरीका है, ये आपको रेफरेंस नजर आ रहे हैं जहां पे मैं कर्सर पुट कर रही हूँ, ये रेफरेंस, Yes, ma'am. ठीक है। तो आप इसको क्लिक करें, यू विल सी, यहाँ पे आपको नजर आएगा APA 5th एडिशन, APA स्टाइल के दो है, 6th और 5th एडिशन मेरे पास। आप लोग अगर कंप्यूटर ज्यादा अच्छा है तो यू विल हैव मच लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। शिकागो 15 एडिशन, और ये GB 7714, एक ये एक और है, गूस्ट है, हार्वर्ड है, IEEE है, ये MLA स्टाइल है, और ये दोनों भी है, ISO है। MLA 6 है, और ये टोराबियन भी है, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी स्टाइल्स, लेकिन उसमें सिर्फ अगर आप लोग को APA भी आपको समझ आए तो ये बाकी सारे आप लोग को इजी लगेंगे कि हाउ कैन वी राइट देम, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं कि 5th और 6th एडिशन, फिर उसके बाद
आप कहते हैं इंसर्ट साइटेशन, ठीक है। तो व्हेन यू क्लिक इंसर्ट साइटेशन, ठीक है, तो ये जब आप न्यू सोर्स पे करते हैं, ठीक है, इंसर्ट साइटेशन में आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स आप जहाँ से भी मैन्युअली भी आप यहाँ से पुट कर सकते हैं कि व्हेन यू आर राइटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ से ये ओपन करते हैं, फिर आप आपने जो साइटेशन जहाँ पे जिस चीज से भी ली थी आप उसका नेम देते हैं। आइदर यू कैन नेम इट अ बुक सेक्शन, जनरल आर्टिकल था, आर्टिकल इन पीरियोडिकल था, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग थे, रिपोर्ट, और आप किसी भी वेबसाइट को भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं कि बिब्लियोग्राफी फील्ड्स फॉर, ये तो सिर्फ इसका नेम है। फिर उसका ऑथर, देन यू राइट द ऑथर नेम, फिर कॉर्पोरेट ऑथर अगर कोई और है, ठीक है, और इसका टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सिटी और पब्लिशर और द पब्लिशिंग कंपनी, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसको कर लेते हैं तो ये आपका रेफरेंस खुद ही यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, एंड इट विल बी एन टेक्स्ट एंड एज वेल एज द रेफरेंस लिस्ट, वो रेफरेंस लिस्ट में भी खुद ही आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से ट्राई कर ले एक दफा, यू विल सी कि आपका जो रेफरेंस है वो एनटेक्स में भी आ जाएगा और वो नीचे रेफरेंस लिस्ट में भी आ जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसको एक दफा ट्राई कर ले आप लोग, अगर आपको समझ नहीं आती तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल। आई होप इट इज क्लियर फॉर टुडे। Yes. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सबको ना समझ आई है? Yes, ma'am. ठीक है, सही है। लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू